Good afternoon, dear students. Today I am going to teach you nature of statistics. So first of all, under nature of statistics, we study whether statistics is a science or an art or both. So here the first point is statistics is a science. So science, if I talk about science, so it means it's only a studies about logic and causes of what is good and what is bad. So science is a body of systematized knowledge. It analyzes the causes and effect and tries to ascertain the generalization which are called laws of the science. So science is a क्या है, साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है और ये एनालाइज करता है व्हाट इज़ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द जनरलाइजेशन ऑफ आइडिया एंड विच जिसे हम लॉज ऑफ साइंस भी कहते हैं. तो जो स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस जो है वो कॉजेज एंड इफेक्ट्स जो भी आइडियाज़ के हैं या जो भी रिजल्ट्स के हैं उसके बारे में स्टडीज़ करता है. सो इट डज नॉट टेल वेदर द रिजल्ट आर गुड और बैड, इट ओनली डिस्क्राइब what are the fact. So it is only as a science. Statistics also always describes the describe only the facts, not about what is wrong and what is bad. So if they always decide the fact of the decisions, and if and these fact is always helpful to analyze the result and take good decisions. So here is example of statistics is a science. So it is like a lighthouse that gives light to the ships to find out their own ways, but does not indicate in which direction they should go. So with the help of this example, here the example of a ship and lighthouse. So लाइट का क्या, यहाँ पे लाइट का क्या बोला गया है कि लाइट सिर्फ ही शो करता है कि वेज दिखाता है, बट ये इंडिकेट नहीं करता कि किस साइड हमें जाना चाहिए. वैसे ही स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो फैक्ट्स को एम्फेसाइज करता है, और ये एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना चाहिए कि उसके लिए क्या बैड है और उसके लिए क्या गुड है. सो बैड एंड गुड की जो अप्रोच है वो स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस सॉल्व नहीं करता. इट्स बेस्ड ऑन ओनली फैक्ट्स रादर देन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज bad or bad. So does any branch of systematized knowledge that states true facts after analysis of causes and effects will be classed as a science. So any branch of the systematic knowledge, जिसकी भी जो भी systematic knowledge है, that state true facts, किसके में होता है, true facts में उसमें जोर दिया जाता है और फिर फैक्ट्स के बाद डिसाइड किया जाता है व्हाट इज़ द क्या कारण है और उससे क्या इफेक्ट्स, उस कंडीशन में क्या इफेक्ट्स होंगे, कॉज होंगे और क्या उसके इफेक्ट होंगे. सो दिस इज कॉल्ड अ साइंस. देन सेकेंड इज स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट. सो साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज एंड बट आर्ट इज अ प्रैक्टिकल साइंस. सो इफ साइंस इज नॉलेज देन आर्ट इज एक्शन. तो आर्ट क्या होगा, एक एक्शन. जो भी नॉलेज होगा उसे हम एक्शन में आर्ट के थ्रू कन्वर्ट करेंगे. सो इट विल बी कन्वर्ट इन थ्रू एक्शन. सो आर्ट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, art is a group of actions to solve a problem. So with the help of these action, any businessman or any solve the problem. Then second, art does not describe facts but examines merit and demerits. So art is not emphasize the facts but also emphasize what is merits. It means what is merit means what is the advantages, and demerit what is the disadvantages, and tell the way to achieve the objective, and also help how to achieve their objectives. So third is artist possess special skill, experience and restraint. So if any businessman have special skills and experience, with these skills and experience definitely they solve any queries, they solve what is that they know, they can know what is the advantages and what is the
disadvantages. So by science we know a thing, but by art we do that thing. So science क्या करता है, पता करता है चीज़ों को, और आर्ट के थ्रू वो चीज़ें कंप्लीट होती हैं. So statistics is regarded as an art of applying the science of scientific method. In the science of statistics we do not study different method of studying a problem. तो साइंस में क्या होता है, सिर्फ दैट इज बेस्ड ऑन लिया facts, but science is does not studying a different kinds of different kinds of methods of the problem, but we also study how those methods should be applied in different situation. But as well as science is always help to how these different methods used in a different situation. Thus statistics in the science of statistics we do not study different method of studying a problem, but in art, if we talk about art always study how this method should be applied in different situations. So with the help of art we solve the problems with the different kinds of methods and techniques. So then third is statistics is both science as well as an art. So neither statistics is absolutely a science nor absolutely an art. तो हम ना उसे साइंस कह सकते हैं, ना हम उसे आर्ट कह सकते हैं. इट इज़ अ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट. सो साइंस क्या, स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो साइंस भी है एज वेल एज वो आर्ट भी है. क्यों, व्हाट इज वाई साइंस स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट? Because first of all science is based on facts, but art is based on a action. So it is a science is that method are basically systematic and have जनरल applications. तो जो भी methods होती है उसको systematic way से यूज़ किया जाता है. But an art is that their successful application depends to a considerable degree on the skill and spatial experience of the statistician. So art क्या होगा, जो भी statisticians होगा उसके पास experience होगा, skills होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. तो जो भी एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, वो उस को अपने प्रॉब्लम्स में लगाएगा और उसे उस कंडीशंस को सॉल्व करेगा. देन देयर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? देयर इज द फर्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक्स में? सो स्टैटिकल डेटा आर अ पावरफुल एड इन इकोनॉमिक एनालिसिस. Professor A. Marshall goes to the extent of saying that statistics are the straw out of which I like every other economics have make bricks. So here statistical data are a powerful aid in economic analysis. So statistics is a powerful techniques or tool of a economic analysis. जो भी problems होगी economics को solve करने के लिए statistics is a kind of a good technique and tool. So here the profession of a Marshall goes, according to profession of Marshall, he says statistics are the straw out of which I like every other economics have to make bricks. तो एक straw का एग्जाम्पल बोला गया है जिससे हर एक इकोनॉमिक्स एक ब्रिक्स कर सकता है. Then the study of every economic problem require the use of statistical method, whether it is concerned with demand or supply, production or sale, cost of production or profit, national income and distribution, theory of employment or interest or money. So statistics is always helpful to solve the economic problem, and this economic problem is related to a demand or supply, production or sale, cost of production or profit, national income or its distribution, theory of employment or interest and money, etc. So their second is importance of statistics in economic planning. As a matter of fact, statistics is the base upon which structure of planning is based in drawing plans, in executing them and evaluating the achievement of plan. So with the help of statistics, economics always make the structure of planning, and this structure of planning is based on drawing of plans. It means that is the initial step of any
सॉल्व दी एनी मेक द प्लानिंग्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे प्लान को, देन एग्जीक्यूट, उसे प्रोसेस में लेके आएंगे, उसे यूज़ करने में लेकर आएंगे, देन एवेल्युएट, उसे उसका जज करेंगे कि जो भी हमने प्लान बनाया है हाउ मच इज़ गुड एंड हाउ मच इज़ बैड, तो उसका जो रिजल्ट है उसको हम उसको फिर एवेल्युएट करेंगे. So every step depends on the strategy is inevitable. Economic planning is now regarded essential for the proper and systematic development of a country. So economic planning, economic is always helpful to development of the country. So if we use statistics in economic planning, definitely it is help to proper and systematic development of a country, because statistics always helpful to make a systematic knowledge.